Okay. Hi everyone. Good morning. So in this session, we are going to discuss about the loops in JavaScript. So you can see we are having the while loop, do while loop, for in loop, and for off loop. So what is the syntax for all these loops and how we can implement these loops in the JavaScript? Okay. So first of all, if you open our last example, here we have created one index.html file. In this file, we are having one external file reference, that is site.js, and in this site.js file, we will actually write our actual business logic. Okay, so in this, let's say I'm going to create one loop here. Okay, why we require loop? Let's say someone has asked you to print 1 to 10 numbers. Okay, in the console, so or in a web page, let's say. So if you want to print 1 to 10 numbers, how we can do that? We need to first of all go document dot write, and in this we can just print 1. Okay, so this way it will just print 1 in a document. Let's run this program. Okay, now you can see there is 1 printed on the document. Now someone asks you just print 2 as well. So what you will do, you will go here, copy this line and print 2 here. Right, now go and see, it will print 1 comma 2. Okay, so this 1 comma 2 is basically it will print on the console with the help of document dot write function. Okay, I want to print one underneath other, so what you can do, you can just print like this: one break, two, refresh. Okay, so this is how it will just print 1 and 2. Now I wanted to print 1 to 10 numbers. Okay, so in that case, what you can do, you don't have to do like this every time. You cannot print or create a new line. Okay, like this you cannot write this line 10 times. So 10 times is, we can say it is possible, but if someone say I want to print this number 100 times, 1000 times, so in that case you cannot do that, right? So that is not a right way to code. So in this case you can go with the loops. So let's say there is a for loop. Okay, in JavaScript we can just create a for. Okay, as I mentioned, we can create a variable. So for creating a variable, you can use where I is equal to 0. Okay, so I is one of the variable which you can just, this is the syntax. I will create give you the syntax first. So initialization, okay, semicolon, condition, semicolon, increment or decrement. Okay, sorry, increment or decrement. So this is the syntax of for loop. In this, you can just mention the statements. Statements means whatever you want to print inside the loop. Okay, like this. So what will happen? Now just replace this syntax with the actual example. Okay, so what will happen? It will basically loop through elements in this syntax. So initialization means int I is equal to 0. Okay, this is my initialization, not int, sorry, where. Okay, so I have created one I variable. In this variable I have basically added this one equal to 0, so I has a 0 value. Okay, now I want to add some condition, I less than 10. Okay, so जब तक I का वैल्यू 10 है, 10 से नीचे है, तब तक क्या करना है, I want to iterate through this loop. Okay, increment and decrement means I plus plus or I minus minus, it is optional. Either plus plus you can do or minus minus. So what will happen? So I is equal to 0, I less than 10 and I plus plus means जब तक I का वैल्यू 0 से 10 तक नहीं जाता, तब तक ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट करो. ओके, वो लाइन क्या रहेगी? डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई का जो वैल्यू है वो प्रिंट करो, और अलॉन्ग विद दैट एक ब्रेक भी देना है मुझे. ब्रेक टैग क्या करता है? अपनी जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने का काम करता है.
ओके, तो दिस इज द फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट। क्या किया हमने, एक I is equal to 0, I less than 10, I plus plus, or loop through this for loop until I's value not become more than 10 or 10. ओके, उससे और कैसे बनेगा वो, क्योंकि हमने I प्लस प्लस करके रखा है ऑलरेडी। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इट विल बेसिकली increase the value of I at every iteration, and it will also check whether the I's value is less than 10, then only go ahead and print this line on the console, on the document. Otherwise, just exit from this loop and stop the execution. Okay, now let's see the output. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, नाउ अभी आपने नोटिस किया रहेगा कि हमें 1 to 10 प्रिंट करना था, लेकिन ये 0 to 9 हो गया। हाउ, बिकॉज यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ। So you can start from 1, okay, and you can mention here equal to 10। तो इससे क्या हो जाएगा, कंडीशन कैसी बन गई अभी, अगर i का वैल्यू 1 है और जब तक कि i का वैल्यू 10 से नीचे नहीं रहता या फिर 10 नहीं रहता तब तक ही अलाउ करना है ये लाइन प्रिंट करने को। एज सुन एज ये इट बिकम्स मोर देन 10, जस्ट क्या करना है अपने को, इसको स्टॉप करना है एग्जीक्यूशन। ओके, 10 से ऊपर गया तो ये लाइन प्रिंट नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स रिफ्रेश, देखो 1 to 10। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद द फॉर लूप। नाउ इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, हाउ वी कैन डिबग दिस फॉर लूप। सबसे पहले क्या होता है, इट विल गो टू द हियर आई इज इक्वल टू 1। ओके, अभी आई में कितना वैल्यू है, 1 वैल्यू। फिर वो जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, देखेगा वेदर 1 is less than 10, yes it is, so it will go inside the for loop, and here it will print document dot write line, okay, I plus br। तो ये क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा और ब्रेक दे देगा। ब्रेक से क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन इट विल डू द आई प्लस प्लस। आई अभी क्या हो गया, 1 से 2 हो गया, चेक करेगा 2 इज लेस देन 10, यस, देन इट विल प्रिंट 2 एंड ब्रेक। सो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, आई का वैल्यू हो गया 3, 2 प्लस 1 3, एंड देन इट विल सी 3 लेस देन 10, यस, देन अगेन ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा और बोलेगा 3 एंड बी आर। यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया, बी आर हो गया, यहाँ पे आ गया। देन आई 3 से क्या हो गया, 4, 4 लेस देन 10, यस, यहाँ पे वो क्या करेगा, 4 प्रिंट करेगा, ब्रेक करेगा और 3 5 पे आ जाएगा। सो ऐसा सो ऑन, वो यहाँ तक आ जाएगा 10 तक। जब आई का वैल्यू 10 हो जाएगा वो देखेगा आई इज लेस देन 10, नो, फॉल्स, आई इज इक्वल टू 10, यस, ट्रू। देन इसके अंदर जाएगा, वो 10 प्रिंट कर देगा, ब्रेक दे देगा। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ब्रेक आ गया। उसके बाद आई का वैल्यू हो गया 11, 10 प्लस 1 11, 11 is less than 10, false, 11 is equal to 10, false, then it will come outside the loop, it will not print anything further। Okay, so this is your for loop। Okay, now let's understand about while loop। अभी while loop क्या होता है, देखो while loop भी for loop जैसे ही रहता है, बस सिंटेक्स अलग है। अभी यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। सिंटेक्स क्या अलग है, देखो सबसे पहले कि where int where I is equal to 0 ऐसे करना है। उसके नीचे while, ओके, I less than or equal to 10, ओके, और उसके बाद इसके अंदर प्रिंट करना है आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, और इसके नीचे करना है आपको आई प्लस प्लस, इस टाइप में से। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, इट विल प्रिंट वाइल, यहाँ पे सेम आउटपुट आएगा, आउटपुट में नो चेंजेस। सी, बस उसको 1 से स्टार्ट करना है और रिफ्रेश करना है। सी, आउटपुट इज सेम, ओके, ओनली चेंज इज द सिंटैक्स। सो यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन था वो भी ऊपर चला गया वाइल लूप के बाहर। यहाँ पे जो कंडीशन थी वो यहाँ पे आ गई वाइल लूप के अंदर, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था सबसे लास्ट में आ गया, बिफोर क्लोजिंग द कर्ली ब्रेसेस ऑफ वाइल, यहाँ पे आ गया। ओके, एंड ये जो स्टेटमेंट थे वो कंडीशन के ऊपर चले गए। एवरीथिंग एल्स इज सेम, ओनली सिंटैक्स इज चेंज। सो योर क्वेश्चन कैन बी, so what is the difference between for and while then, if both are producing the same output?
तो वाई वी रिक्वायर टू डिफरेंट लूप्स? ओके, तो उनका जो नाम है ना उसके ऊपर आपको फोकस देना है। फॉर, फॉर दिस टू दिस लेंथ। ओके, फॉर मतलब क्या? फॉर को क्या होना, क्या करना पड़ता है? स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट देना पड़ता है। ओके, फॉर अ स्पेसिफिक लेंथ इट विल इटरेट। व्हाइल यानी क्या? जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इटरेशन इटरेट करना है। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं है। ओके, जैसे कि आप मान लो एक फाइल रीड कर रहे हो। ओके, एक फाइल है, उस फाइल में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, नोटपैड फाइल है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है। तो आप क्या करोगे? वो सब कैरेक्टर को इटरेट करोगे, राइट? और आपको पता नहीं कि वो फाइल में कितने कैरेक्टर्स है। 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, 1000 हो सकते हैं। तो कंडीशन क्या डालेंगे अपने यहाँ पे? जब तक फाइल में नेक्स्ट कैरेक्टर है तब तक इटरेट करो, until you reach to the end of the file. Okay, so this is how you can basically just use the while loop when you're not sure about the condition कब end होगा, when you are not sure about the end point. Okay, कितने iterations होंगे while doing the development आपको नहीं पता है, लेकिन आपको अगर फिक्स पता है मुझे यहाँ से यहाँ तक 10 इटरेशन करने हैं, 5 इटरेशन करने हैं, 15 इटरेशन करने हैं, इन दैट केस यू कैन गो एंड यूज फॉर लूप। लेकिन while doing the development you are not sure how many iterations it will do, in that case you can go with the while. Got it? जैसे कि अभी मैं डेवलप कर रहा हूँ, मेरे पास 10 फाइल है, एक फाइल में 2 कैरेक्टर है, एक फाइल में 10 कैरेक्टर है, एक फाइल में 100 कैरेक्टर है। तो ये क्या करेगा? अगर मैंने फाइल 1 चूज किया तो ये 2 बार इटरेट करेगा। अगर मैंने फाइल 2 चूज किया तो ये 20 बार इटरेट करेगा। इटरेट यानी लूप घूमेगा। अगर मैंने तीसरा फाइल लिया, ये 100 बार घूमेगा। इट मीन्स the exit point for this loop is depend upon your input file. At the time of development, we cannot confirm how many times this loop will get executed. Okay, so in that case, you can go and use while loop. Lekin, if you know for sure, I want to iterate 10 times, I want to iterate 5 times, I want to iterate 100 times. In that case, you can go and use for loop. Got it? Because you have the starting condition, you have the ending condition, and you also have the increment, decrement. So just mention that whatever you know and print it. ये लूप 10 से ज्यादा कभी नहीं घूमेगा। ओके, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मैंने 10 हार्ड कोड किया है, यहाँ पे 1 हार्ड कोड किया है। so this loop will only execute 10 times, not more than that. Got it? So this is how it will basically work. This is for loop and while loop. नेक्स्ट लूप है डू while loop. अभी डू while loop क्या रहता है कि इट विल बेसिकली वर्क बेस्ड ऑन एटलीस्ट वन टाइम। अगर आपका कंडीशन फॉल्स रहेगा तो भी वो वर्क करेगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला है, देखो, डू व्हाइल, राइट? सो वन इज आई इज इक्वल टू 1 एंड आई इज ग्रेटर देन 1, ऐसा मेरा कंडीशन। नाउ अगर आपने ठीक से एनालाइज किया, आई का वैल्यू है 1 और आई इज ग्रेटर देन 1, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि आई इज नॉट ग्रेटर देन 1, क्योंकि उसमें 1 है and 1 is not greater than 1 is equal to 1. Okay, that's why this condition will false. And अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका कंडीशन ही गलत है। एक भी इटरेशन नहीं होगा क्योंकि आपका कंडीशन ही गलत है। वो ऑलवेज फॉल्स ही रिटर्न करने वाला है। इफ इट ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, देन इट विल नेवर एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, लाइन नंबर 5। ओके, सो अगर ऐसा है, सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? डू वाइल यूज कर सकते हो। अगर ऐसा हो सकता है ना कि एटलीस्ट वन टाइम वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो यू कैन गो एंड यूज डू वाइल लो, डू एंड यहाँ पे वाइल रहता है, वाइल, लाइक दिस।
अभी डू वाइल लूप से क्या हो जाएगा, अगर आपका कंडीशन गलत है, आपको पता है कंडीशन गलत है, लेकिन फिर भी वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा, फिर बाद में चेक करेगा कि कंडीशन गलत है, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, मैंने ये रिफ्रेश किया, डू, एक मिनट, हाँ। ओ, ग्रेटर देन वन लिखा है, लेस देन लिखना था मुझे, सॉरी। ओके, आई इज इक्वल टू वन, सॉरी ग्रेटर देन ही रहेगा, लेकिन ये प्लस प्लस की वजह से क्या हो रहा है कि वन का टू हो जा रहा है, फिर वो कंडीशन ट्रू हो रही है, प्रिंट हो रहा है, ट्रू हो रही है, प्रिंट हो रहा है। सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दिस वन लेट्स डू माइनस माइनस। इन दिस केस क्या होगा, अभी आई का वैल्यू है वन, फिर वो प्रिंट करेगा, वन से हो जाएगा जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन वन, फॉल्स, देन इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग। सो लाइक दैट। तो यहाँ पे अभी ये क्लोज करना पड़ेगा, फिर से ओपन करना। सी, यहाँ पे भी वन प्रिंट हो गया। वाई वन? इवन दो योर कंडीशन इज फॉल्स, okay, I is not greater than 1, it is 0 this time, even your condition is false, it will print your output at least one time. So if you want to do like this, you can go with the do while loop. Okay, so you got the understanding of for loop, while loop, and do while loop. Give me a minute. ओके, तो नेक्स्ट लूप है फॉरेन लूप। फॉरेन लूप यानी क्या, कि अगर इफ यू वांट टू loop through the properties of your object, okay, so let's say you have one object like this, where person equal to, or student, let's say student, okay, student has some property like student name, student का नेम है मान लो जॉन, ओके, उसके बाद उसका एज 30, जेंडर मेल। सो आपको क्या करना है, you want to iterate through all these properties of the student object, print the key as well as value in the console, okay. So how we can do that, you can do that by using the for in loop, okay. अभी for in loop कैसे, how you can use that, you just need to mention where key in person, okay, key in person or key in student, हम अभी student ले रहे हैं, okay. So in this case what will happen, it will iterate through each and every property like name, age, gender, so like that. So it will iterate through each and every property of your object, and it will print on the console or document like this, document dot write। यहाँ पे आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो जैसे कि की, ओके, आई वांट टू प्रिंट द की फर्स्ट यहाँ पे, और की के बाद मुझे क्या करना है, उसका वैल्यू प्रिंट करना है, जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ key. So this is how you can just print the key, ये सिंबल एंड उसका वैल्यू, ओके। स्टूडेंट में नेम जो है उसका वैल्यू क्या है, जॉन, दिस इज योर ऑब्जेक्ट नेम, दिस इज प्रॉपर्टी नेम, दिस इज प्रॉपर्टी वैल्यू। आई वांट टू प्रिंट द प्रॉपर्टी नेम, देन आई वांट टू प्रिंट दिस वैल्यू। तो ये क्या प्रिंट करेगा, नेम जॉन, एज 30, जेंडर मेल, और ये सब मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई विल प्रिंट लाइक दिस ब्रेक, दैट्स इट। अभी आप एक बार रिफ्रेश करके देखो, सी, नेम जॉन, एज 30, जेंडर मेल, ये सब क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर ईच लूप, ओके, फॉर इन लूप। अगर मुझे मान लो और एक वैल्यू मैंने डाल दिया, जैसे कि स्कूल नेम,
ओके, ए बी सी, हमने एक प्रॉपर्टी और बढ़ा दिया. So in order to print this property in the UI, you don't have to do any extra work because this loop will take care of that newly added property as well. देखो, स्कूल नेम में भी से ये कैसे हो गया? क्योंकि this loop will iterate through all the available properties from your object. ओके, पहले 3 प्रॉपर्टी थे इसलिए ये 3 बार इटरेशन हुआ. अभी इसमें 4 प्रॉपर्टी है, then it will iterate through 4 times. Okay, so this is how it will basically work. Okay, and this basically it will iterate through all the keys of your object, and by using that key you can anytime get the value from the object like this. So that's why I have printed the key here, I have printed the value here. Got it? So this is your for in loop. Okay, then next loop है आपका for off loop. Okay, for off loop क्या होता है कि it will also work on the array or object. Okay, जैसे कि देखो मैं आपको सेम एग्जांपल है. अगर आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे मान लो अभी एक यही यही एग्जांपल लेते हैं अपन. ओके, आपको ये ऐसे प्रॉपर्टी में से वैल्यू नहीं लेते आ रहा है, यू कांट डू दैट. सो इन दैट केस you can do like this as. So I'm just commenting this code here. You will get the actual student object. Okay, for off, यहाँ पे in था, मैंने यहाँ पे off डाला. ओके, नाउ अभी क्या होगा, स्टूडेंट में से एक, लेकिन ये एरे होना चाहिए. मान लो आपके पास एरे ऑफ स्टूडेंट है ऐसा. ओके, सो ये पहला स्टूडेंट है, कॉमा, ये दूसरा स्टूडेंट है. ओके, जॉन, इस पे डाल दो संदीप, एज इज 25, मेल, स्कूल नेम इज PQR, ऐसा कुछ. ओके, अपने पास अभी 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2. आई वांट टू इटरेट थ्रू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. पहला स्टूडेंट भी मुझे प्रिंट करना है, दूसरा स्टूडेंट भी प्रिंट करना है. सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, you will get student information in student object, student dot name. ये बस नेम प्रिंट करेगा अभी. ओके, दोनों स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे संदीप प्रिंट करेगा और जॉन प्रिंट करेगा. ये देखो रिफ्रेश करके, जॉन एंड संदीप. So if you want to iterate through each and every element from an array of object, then you can use for off loop. ओके, और मुझे प्रिंट करना है कि उसका एज प्रिंट करना. सो आई विल डू लाइक दिस, स्टूडेंट डॉट एज. जॉन, जॉन का एज, संदीप, संदीप का एज. ओके, और सबसे पहले मुझे डिवाइडर भी डालना है. प्रिंट करने के बाद एक डिवाइडर भी डालना है कि भाई ये अभी प्रिंट हो गया, इसके बाद में जो भी वैल्यूज आएंगी वो अगले स्टूडेंट की होंगी. सो आई कैन डू लाइक दिस, सी, और ब्रेक. अभी देखो, जॉन उसका एज, संदीप उसका एज, फिर और अगर मैंने और एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, मान लो इसी डिक्शनरी में, इसी एरे में आई हैव एडेड वन मोर ऑब्जेक्ट दैट इज लेट्स से आकाश. ओके, एंड इसका एज है लेट्स से 22, उसका स्कूल है XYZ. रिप्लेस. ओके, so same loop will take care of all these elements. As soon as your array of object got a new element, okay, it will automatically take the new value like this, automatically cover that value in the loop as well. Got it? So this is how we can just work with for off loop, for in loop, and while loop, do while loop, and for loop. I hope you got the understanding of the loops. Let me stop the recording and we'll discuss.